Hello everyone, welcome to our topic of discussion that is class 11th biology chapter number 9 that is biomolecules. Myself Dibyaranjan Parida and I am pursuing my second year MBBS from AIMS right now. So let's our topic of discussion for today. So biomolecules first question gonna a multiple question. It is said that chemical composition of living organisms that of inanimate objects like Earth's crust are similar in sense that are all in measurement are present in both. Then what would be the difference between these two groups? Choose a correct answer from the among. So suppose जितने कोटे living organism elemental composition और Earth's crust elemental composition होउଛନ୍ତି similar in the sense of measure element. त्याने ताका ଭିତରେ difference कौन है जाक group ଭିତରେ ଆଉ ତାର option कोटा ठीक. The first one living organism says more gold in them than inanimate object. Living organism करने more gold अच्छी कौन ना inanimate object गुरु. एटा false हो गया ना inanimate object बहुत Earth's crust बेसी gold अच्छी. Living organism has more water in their body than inanimate object. एटा false हो गया ना living organism रे कम पानी अच्छी Earth रा living organism रे पारा 70% कार 50% पानी थिला Earth crust 79% पानी first Earth रे then environment रे भी ताटो अधिका पानी अच्छी. Living organism says more carbon, oxygen, hydrogen per unit mass than inanimate object. यार तो ठीक लागू ची. Living organism says more calcium in them than inanimate object. एटा भी वो जी inanimate अधिका रहिबो. तो आमे जदी तार जो येटा देखिया बुझिया आमे जदी तार टेबल टा देखिया बुझिबा चैप्टर तो कौन अछि ना एटे एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर. देखो इन ह्यूमन बॉडी रे हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन बेसी अछि कारण अर्थ क्रस्ट बेसी अछि आ कोन अछि गोल्ड के देनी बट गोल्ड के तो हमें जाने छी गोल्ड अछि अर्थ ऑब्वियस दिया रे काहे ह्यूमन बॉडी फाइन गोल्ड रेटा नॉर्मल जिंस नुहे तो सेटा अर्थ क्रस्ट बेसी रहबो आ वाटर तो अर्थ क्रस्ट रे अधिका से उठ रही छै. तो आंसर कोन हबो आंसर सी हबो. आंसर कौन हबो आंसर सी हबो. It is living organisms more carbon, oxygen, hydrogen per unit mass than inanimate object. Tabro question one. Many elements are found in living organisms in either free or in the form of compound. Which of the following is not found in living organisms? Silicon, magnesium, iron, sodium. The answer कौन होगा? आंसर होगा सिलिकॉन. सिलिकॉन तो ह्यूमन बॉडी देखा को मिला सिलिकॉन ह्यूमन बॉडी में तो मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी तो आयरन तो सोडियम तो पर सिलिकॉन में तो माइक्रो एलिमेंट भीतर मैग्नीशियम आयरन और सोडियम आसंती बट सिलिकॉन आसने. तापर कौन ना एमिनो एसिड्स have both amino acids have both an amino group and a carboxylic group in the structure. Which of the following is an amino acid? या पुत्र बोला जाए amino acid आंक भीतर कोटा है. तो ऑप्शन कौन ना फॉर्मिक एसिड ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइसिन. तो जानिछ हम एठी जणा पडी होछ कोन ना फॉर्मिक एसिड ता HCOH तो सेटा ओटे एमिनो एसिड ने तापर ग्लिसरॉल ता कोन ग्लिसरॉल ता होची CH2OH सेटा बिताना होबनी आउ कोन ना ग्लाइकोलिक एसिड ने बट ग्लाइसिन ता गोटे एमिनो एसिड जार स्ट्रक्चर कोन जार स्ट्रक्चर होची NH2CHH COOH এটা হচ্ছে গ্লাইসিন. এটা হচ্ছে গ্লাইসিন. এটা গ্লাইসিনটা কোন না গ্লাইসিনটা হচ্ছে ফার্স্ট যেটা অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ एमिनो एसिड सब सिंपलेस्ट अमीनो एसिड लागू स्वीट अमीनो एसिड भी कहा जाए এটা কোন না গ্লাইসিন. তো এটি आंसर কোন না গ্লাইসিনটা হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড. An amino acid under certain condition have both positive and negative charges simultaneously in same molecule. Such a form of amino acid is called Deuterium form. Such a form कौन कहते हैं Deuterium form. এটা हम पढ़ी चे Deuterium form ताक कहते ना Deuterium का एक न्यूक्लियर मॉलिक्यूल जार both anionic और cationic charges का same molecule रे और amino acid और next example हो Deuterium रो যদি অ্যাসিডিক সলিউশন दा एमिनो एसिड होतो से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करी कोन करिवो ना पॉजिटिवली चार्ज होबो. যদি अल्काइलाइन सॉल्यूशन रखो तने कोन होबो ना कार्बोक्सिल ग्रुप ता हाइड्रोजन को डोनेट करिके नेगेटिवली चार्ज होबो.
जो pH रे एमिनो एसिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहले त कोन करला आइसोइलेक्ट्रिक pH और आइसोइलेक्ट्रिक pH कोन देखा जाए ना ड्यूटेरियम देखा जाए। तो मैं तुमको एग्जांपल देके बुझेबी तुम बुक रे भी अछि ए देखो एटा ड्यूटेरियम फॉर्म एटा कोन एटा ए जे एटा को एटी अछि एटा वो आइसोइलेक्ट्रिक pH रे pH सेटा होछि ड्यूटेरियम फॉर्म तापर एटा कोन हो एटा हबो हाई pH रे माने हाई pH माने बेसिक एनवायरनमेंट एटा एनायनिक हेला काना एटी उटा नेगेटिव चार्ज थिला तापर एटा कोन ना एटा होछि लो pH रे दैट इज एसिडिक एनवायरनमेंट रे कोन हबो ना कैटायनिक फॉर्म होछि एसिडिक कैटायनिक जो एना से उडे H+ गेन करके नीचे एनवायरनमेंट रो NH3 प्लस ही जिवो तो NH3CH COH ड्यूटेरियम फॉर्म में कोन हैला ना आइसोइलेक्ट्रिक pH रे कोन हबो ना CH गोटे पॉजिटिव भी हबो एटी पॉजिटिव भी हबो एटी नेगेटिव भी हबो तापर एटी कोन हबो हां NH2CH और CO माइनस एटी बेसिक एनवायरनमेंट कोन हबो नीचे H+ को डोनेट कर देबो तापर नेगेटिव चार्ज आस जिवो तापर sugars are technically called carbohydrates. Sugars are technically called carbohydrates, referring to the fact that their formula are only multiple of CH2O. Hexose therefore have 6 carbons, 12 hydrogen, 6 oxygen atoms. Glucose is a hexose. Used from the following. Another hexose. तो ये कौन अच्छी ना फ्रुक्टोज एरिथ्रोज राइबोलोज और राइबोज ये देछि तो हम फास्ट देखियो फ्रुक्टोज तो जानछ फ्रुक्टोज तो होछि चेन जदि कर दो तन सेटा 5 चेन ना 5 कार्बन वाला रिंग हे जो 5 कार्बन वाला रिंग जो तब जदि चेन करि रखियो तो कोन हबो तार फार्मूला हो जो C6H12O6 फ्रुक्टोज कोन ना C6H12O6 अदर फॉर्म ये फॉर्मेशन ना कोन ये फ्रुक्टोज रो ना CH2OH HOH 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 और कौन ना CH2OH ना CC फ्रुक्टोज टा हो जो एटा वाला कौन ना फ्रुक्टोज आयो ना फ्रुक्टोज ला से बळे एरिथ्रोज टा कौन एरिथ्रोज टा हो जो टेट्रोज एटा C4 H8O4 एरिथ्रोज टा टेट्रोज C4H8O4 तो तार फॉर्मेशन कोन ता फॉर्मेशन दा कोई लाभ कोन सेटा सेमिति एमती होबो OH HH तापर CH2OH हेला एटा तला कोन ना एरिथ्रोज सेम तो राइबोलोज टा होचे गोटे पेंटोज बट सेटा राइबो लिखा छि माने सेटा कोन ना कीटोन गेरो तो राइबोलोज ता गला तापर कोन अछि ना राइबोज टा गोटे पेंटोज सुगर एटा कोन ना पेंटोज C5 वाला ये भी C5 वाला तने गोटे हेक्सोज माने होची C6 तने आंसर कोन हो ना फ्रुक्टोज हो फ्रुक्टोज हो C6H12O6 फ्रुक्टोज टा होची आंसर when you take cells or tissue pieces and grind them with an acid in a mortar or pestle all the small biomolecules dissolve in the acid protein, polysaccharide, nucleic acid are insoluble in mineral acid and gets precipitated. The acid-soluble compounds include amino acids, nucleoside, and small sugar, etc. When one adds a phosphate group to a nucleoside, one gets another acid-soluble biomolecule called जदि आम न्यूक्लियोसाइड जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करिया कौन एत कथा जो लिखला सब यूजलेस कथा एत कथा जो लिखला सब यूजलेस कथा मेन कथा कौन आसला न्यूक्लियोसाइड रे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कले कौन हम न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप ऐड कले न्यूक्लियोटाइड हम न्यूक्लियोसाइड टा कौन नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेसिस प्लस राइबोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर तो सेतरे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कले कौन हम न्यूक्लियोटाइड हे जो तो एक कथा लिख एत कथा क्वेश्चन लिखे लास्ट क्वेश्चन टा कौन ना न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप ऐड कले कौन हम ना न्यूक्लियोटाइड हम when we homogenize any tissue in an acid the acid soluble pool represents जते बेला कौन ना होमोजेनाइज करबो होमोजेनाइज रो माने कौन ना होमोजेनाइज टा गोटे मैकेनिकल डिवाइस रो हुए जेते को एनिमल टिश्यू को कोन कह जाए ना एसिड रो पका जाए तो एसिड सॉल्युबल पूल रो कौन हुए ना
होमोजेनाइज कौन हुए ना से मेसिन होमोजेनाइज गोटे मेसिन अच्छी से होमोजेनाइजेशन कर कौन हुए ना गोटे टिश्यू बा गोटे ये को बायोलॉजिकल सैंपल को एमती स्टेट पहुंचे जो कौन ना सब फ्रैक्शन रो सैंपल होची इक्वल इन कंपोजिशन थांती तो ये क्वेश्चन देखला जदि हमें होमोजेनाइज करे गोटे टिश्यू को तना एसिड सॉल्युबल कागज रिप्रेजेंट करिवो ना एसिड सॉल्युबल कागज रिप्रेजेंट करिवो ना साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करिवो फुल कागज रिप्रेजेंट करिवो ना साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करिवो तना काहे ना एसिड सॉल्युबल साइटोप्लाज्म टा टिके एसिडिक साइटोप्लाज्म टा एसिडिक ता एसिड सॉल्युबल फुल्ली साइटोप्लाज्म रहइवो the most abundant component in a most abundant chemical a component of living organism is what type water is the most abundant component of living organisms. A homopolymer has only one type of building block called monomer repeated n number of times. A heteropolymer has more than one type of monomer. Proteins are heteropolymers usually made of proteins are heteropolymers usually made of कौन कहया ताने प्रोटीन टा गोटे हेटेरोपॉलीमर लिखला फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन कोथे फॉर्मेशन होची प्रोटीन फॉर्मेशन एमिनो एसिड रे तने आम बॉडी रे एमिनो एसिड केतरा अछि हमरो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड मिसी के जे के प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करे सेटा होची 20 टा एमिनो एसिड तने 20 टा एमिनो एसिड को जदि हम सब एमिनो एसिड जदि गोटे मोनोमर दबा ताने protein is an heteropolymer with 20 monomers with 20 types of monomers तने 20 टाइप मोनोमर्स मिसी कहते ना प्रोटीन फॉर्मेशन करती सेने प्रोटीन इज हेटेरोपॉलीमर कंसिस्ट ऑफ 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स तापरे proteins perform many physiological functions for example some functions as enzymes which of the following represents an additional function that some proteins discharge कुछ प्रोटीन सब एंजाइम बड़े काम करे आउ कोन एडिशनल फंक्शन अछि जोटा कि प्रोटीन करता है तो फर्स्ट ऑप्शन कौन ना एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक्स टा कौन एंटीबायोटिक्स टा होची गोटे केमिकल कंपोजिशन जोटा कि बैक्टीरिया मान को अगेंस्ट वो माइक्रोबियल जेमति हेल्मिथ निमाटोड एमान को अगेंस्ट को करे ना दिया जाए गोटे पेशेंट को सेटा प्रोटीन बे पर सेटा किछि बे पर तो फर्स्ट लिखो एंटीबायोटिक्स मेन सेटा गोटे केमिकल कंपाउंड होते प्रोटीन होबार चांसेस सेटा बहुत कम तो एंटीबायोटिक टा होबनी पिगमेंट कंफरिंग कलर टू स्किन तो पिगमेंट कंफरिंग कलर टू स्किन सेटा होची मेलानिन सेटा भी गोटे प्रोटीन नुए सेटा भी गोटे कॉन्स्टिट्यूटिव कंपाउंड तो सेटा भी होबनी तार पिगमेंट मेकिंग कलर्स ऑफ फ्लावर सेटा भी प्रोटीन नुए सेटा गोटे नॉर्मल केमिकल कंपाउंड आ तापरे कोन ना हार्मोन टा कोन हार्मोन टा होची प्रोटीन केमती ना हार्मोन टा कौत्र फॉर्मेशन है हार्मोन ओडा को सब एमिनो एसिड रो कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन है जो हम 20 टा एमिनो एसिड अछि तो ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन्स तो एंजाइम्स और हार्मोन दियों दा कोन ना प्रोटीन तो एटी आंसर कोन होबो ना हार्मोन होबो glycosyl is a homopolymer made of glucose units galactose unit ribose unit amino acids तो आंसर कोन होबो ना ग्लूकोज यूनिट तो ग्लाइकोजन टा कोन ना ग्लाइकोजन पचले कोन हो ना ग्लाइकोजन टा गोटे स्टोरेज पॉलीमर था जोटे एनिमल्स होता है ग्लाइकोजन रे ग्लूकोज माने कोथरे लिंक हेतांती ना 1 अल्फा 14 लिंकेज और अल्फा 16 रे ब्रांचिंग हेते galactose कोन galactose तो गोटे मोनोसैकेराइड जेटा कि ग्लूकोज प्लस इना जेटा कि ग्लूकोज संगे मिसे कोन बना लैक्टोज हबो तने galactose टा गोटे पॉलीमर ना गोटे सेटा गोटे मोनोमर राइबोज टा कोन राइबोज टा गोटे पेंटोज मोनोसैकेराइड और एमिनो एसिड कोन एमिनो एसिड तो एमिनो एसिड तने ग्लाइकोजन कोथरे फॉर्मेशन हेते ना ग्लूकोज में एमिनो एसिड तार प्रोटीन बनाए लैक्टोज राइबोज तंको अलग काम करते the number of ends in glycogen molecule would be glycogen molecules रे केतरा ends अछि ना ग्लाइकोजन टा कोन ना एटा बुझियो जे एंड्स काहे लिखला ना ग्लाइकोजन टा कोन ना गोटे मल्टीप्लस पॉलीसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट काहे ना से ग्लूकोज यूनिट माने कोन था से माने पॉलीमर्स बनाती विथ ब्रांचिंग सहित अल्फा 16 ब्रांचिंग सहित तो ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ଗୋଟେ ଏନିମାଲ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଫୁଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାବେ କାମ ଦିଏ ସବୁ ଏନିମାଲ ଷ୍ଟାର୍ଚ କହନ୍ତି ଆଉ ତାର କଣ ନା ସଚ ଢେର ନମ୍ବର ଅଫ ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ଥାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ମାନେ ନେଇକି ତ ଆମେ ଯଦି ତାର ଇଏ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ତାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିବା
ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ କେମିତି ଏମିତି ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଏମିତି ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିଲା, ତାର ଏମିତି ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଏଠି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଏମିତି କଲା କଲା ଏମିତି କଲା, ଏମିତି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଲା। ତ ସେ କହିଛି ନମ୍ବର ଅଫ ଏଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ମଲିକ୍ୟୁଲର, ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଅଫ ଏଣ୍ଡସ୍ କେତିକି ହବ ନା ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ହବ 3 4 5 6 7 8, ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଦେଖିଲେ କଣ ହବ, ଏଠି ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ କେତେଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଯେତେ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଦିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତିନିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତାପରେ ଏଟା ଚାରିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଛଅଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ସାତଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତ ଏଠି ସାତଟା ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରୁ ସାତଟା ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ହେଇକି ତାର ଏଣ୍ଡସ୍ କେତେଟା ହେଲା ନା 8ଟା ଏଣ୍ଡସ୍ ହେଲା, ତାର ସାତଟା ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ହେଇକି ଏଣ୍ଡସ୍ କେତେଟା ହେଲା 8ଟା ଏଣ୍ଡସ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ପ୍ଲସ୍ 1, ତାହେଲେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ର ଏଣ୍ଡସ୍ କେତିକି ନା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ପ୍ଲସ୍ 1, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆନ୍ସର। ତାପରେ କଣ, the primary structure of protein molecule has, the primary structure of protein molecule has two ends, କେମିତି ନା ଗୋଟେ ହଉଛି NH2 वाला एंड, गोटा हूँ एमिनो एसिड वाला एंड, गोटा हूँ कार्बोक्सिल एंड, गोटा हूँ N टर्मिनल, आउ गोटा हूँ C टर्मिनल, तो आंसर कौन हबो ना 2 एंड। तापर कौन, which of the following na enzymes are biocatalyst, they catalyze biochemical reactions, in general they reduce activation energy of reactions, many physiochemical processes are called enzyme mediated, which of the following reactions is not enzyme mediated in biological system, तो यहाँ कभी तो कोटा enzyme mediated नुहे। फर्स्ट ऑप्शन कौन देते हैं, डिसॉल्विंग ऑफ CO2 इन वाटर, हो याको हम रखियो। तापर कौन ना अनट्विनिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, एटा तो हमरो एंजाइम रोची, एटा को एंजाइम रोची ना टॉपआइसोमरेज, को एंजाइम अनवाइंडिंग कर DNA को ना टू स्ट्रैंड को ना सेटा होची टॉपआइसोमरेज। तापर हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर के करे ना हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज के करे ना सुक्रेज एंजाइम करे, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के करे ना पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम करे। तो एठी अनट्विनिंग ऑफ DNA टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA के होची ना टॉपआइसोमरेज रोची, हाइड्रोसिल ऑफ सुक्रोज रो सुक्रेज रोचे, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम रोची। तो CO2 जो वाटर डिजल्व करे सेतरे को एंजाइम दरकार नै, जेका आपे आपे डिजल्व कर जिवो, सेटा गोटे बेसिक प्रोसेस, एतो आंसर हबो कोन ना ए, डिसॉल्विंग ऑफ CO2 इन वाटर। तापर हमर एसला वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, medicines are either man-made, that is synthetic, or obtained from living organisms like plants, bacteria, animals, etc. Hence, the latter are called natural products. Sometimes natural products are chemically altered by man to reduce toxicity or side effects. Right against each of the following whether they were initially obtained as a natural product or as a synthetic product. तो कहते पेनिसिलिन फर्स्ट तो नेचुरल प्रोडक्ट मिलला ना सिंथेटिक प्रोडक्ट मिल समस्त भी सुनिक। तो पेनिसिलिन टा कोन, पेनिसिलिन टा होजो गोटे ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स जेटा कि पेनिसिलियम फंगाई रो हम डिराइव करथिले, तो तार डायरेक्ट फंगाई जो डिराइव होता सेटा कोन हबो ना गोटे नेचुरल प्रोडक्ट हबो। तापर सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड टा गोटे कोन ना सेटा गोटे एंटी माइक्रोबियल एजेंट, सल्फोनामाइड टा कोन गोटे एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो सेटा कोन सेटा को ईयर मिलेनी, सेटा को एनिमल्स व प्लांट्स में मिलेनी, तो सेटा कोन हबो ना सिंथेटिक हबो सल्फोनामाइड। तर कोन ना विटामिन सी, विटामिन सी टा कोन गोटे एस्कॉर्बिक एसिड बा एस्कॉर्बिक बा एल एस्कॉर्बिक एसिड, तर कोन ना सेटा गोटे नेचुरल प्रोडक्ट सेटा सब ऑर्गेनिज्म रो अछि। तो विटामिन सी कोन हबो ना गोटे नेचुरल प्रोडक्ट हबो, सेटा साइट्रस फ्रूट रो अछि, सेट मैटर गोटे नेचुरल प्रोडक्ट हबो। और ग्रोथ हार्मोन कोन, ग्रोथ हार्मोन टाइप गोटे नेचुरल प्रोडक्ट हबो, काहे सेटा बॉडी रे नेचुरली फॉर्मेशन होछि, सोमाटोट्रोपिन सोमाटोट्रोपिन। तो ग्रोथ हार्मोन टा कोन हबो ना नेचुरल हबो, तो नेटी कोन ये होछि नेचुरल, ये नेचुरल, एटा होछि सिंथेटिक। तापर कोन हला, select an appropriate chemical bond among ester bond and glycosidic bond and peptide bond and hydrogen bond and write against each of the following. तारे पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कोन हबो, पॉलीसैकेराइड रो हबो हमरो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पॉलीसैकेराइड कोन हबो ना मठ लिखिते ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सब पॉलीसैकेराइड में कोन ना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होय, सेटा कोन ना गोटे OH आउटर OH आसे सेटारो H2 बाहर नहीं जाए, तब से कौन हुआ ना एमिति फॉर्मेशन एप्रोटमेंट गोटे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एटा कोवैलेंट बॉन्डिंग जो लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड देखिया को मिले ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ताबे कोन ना प्रोटीन प्रोटीन गोटा का अधिक लिंक थांती ना पेप्टाइड बॉन्ड लिंक थांती।
प्रोटीन गुड़ा कौन ना पेप्टाइड बॉन्ड लिंक थाते से कौन करती ना दुईटा जाक एमिनो एसिड गोटे कार्बोक्सिल ग्रुप आ गोटे एमिनो एसिड ग्रुप कौन कहते ना रिएक्शन है वाटर रिलीज कर दिखते तो केमती फॉर्मेशन हुए ना एमती आसो सी एटा तो ये सीधा COOOH प्लस HHN एमती दुटा वाटर बाहरी गला फॉर्मेशन कौन हम ना COAHN है पेप्टाइड बॉन्ड है प्रोटीन भाई एमती मैंने देखा जाए पेप्टाइड बॉन्ड केमती फॉर्मेशन हुए एटा है डिहाइड्रेशन है कौन वाटर रिलीज हुआ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन तापर फैट मान कौन ना फैट मान ईस्टर बॉन्ड टा केमती इरेज कर दिए ईस्टर बॉन्ड केमती ना गोटे OH सांगर प्लस का संग करिवे ना COH संग करिवे C संग करिवे एटा तांकर वाटर गोटे बाहरी गला तार फॉर्मेशन वो C फॉर्मेशन ला एटा हला कोन ना ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हे गला तो एटा तिला कोन ना फैट मान कोन ना ईस्टर बॉन्ड आ हाइड्रोजन बॉन्ड कायर ना वाटर मान होचंदे हाइड्रोजन बॉन्ड जेटा हमर थाए नॉर्मली H2 O O H H O तांको भीतर जदि टिके हाइड्रोजन बॉन्ड रहला सेटा होछ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मान को कोन थाए ना हाइड्रोजन बॉन्ड थाए तो पॉलीसैकेराइड मानकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रोटीन मानकर पेप्टाइड बॉन्ड फैट मानकर ईस्टर बॉन्ड हाइड्रो ना वाटर मानकर हाइड्रोजन बॉन्ड थाए write the name of any one amino acid sugar nucleotide and polypeptide ना nucleotide and fatty acid तो amino acid के होबो ना ग्लाइसिन न्यूक्लियोटाइड के होबो ना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सुगर के होबो ना लैक्टोज फैटी एसिड के होबो ना स्टीयरिक एसिड फैटी एसिड के होबो ना स्टीयरिक एसिड एमिनो एसिड लिख दो कोन ग्लाइसिन किछि लिखे ग्लाइसिन सुगर रे कोन होबो सुगर ग्लूकोज लिख दो तो न्यूक्लियोटाइड कौन हम एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी कहते एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फैटी एसिड के हम ना स्टीयरिक एसिड ना स्टीयरिक एसिड reaction given below is catalyzed by oxidoreductase between two substances A and A dash complete the reaction तो कोई ऑक्सीडोरेडक्टेज माने गोटे ऑक्सीडेशन हो आउट रिडक्शन हो तांको भीतर रिएक्शन करबो ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम तने केमते काम करे ना ऑक्सीजन रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बोथ करे जेटा कंपाउंड रो मान जो कंपाउंड टा ऑक्सीडाइज होबो तर आउ गोटे कंपाउंड कोन होबो ना रिड्यूस्ड होबो गोटे कंपाउंड ऑक्सीडाइज ना आउट कंपाउंड टा कोन होबो ना रिड्यूस्ड होबो माने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होबो फ्रॉम वन मॉलिक्यूल दैट इज द रिडक्टेंट टू इलेक्ट्रो काको ना आउट मॉलिक्यूल को जाको ऑक्सीडेंट को आजियो तो सेटा कहते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ताने केमती होबो एग्जांपल ना ए रिड्यूस अछि ए डैश ऑक्सीडाइज फर्स्ट हम लिख देचे एटा कोन होबो ना ऑक्सीडाइज हे जिवो तापर ए डैश ता कोन होबो ना रिड्यूस्ड हे जिवो केमती ना एठी गोटे इलेक्ट्रॉन जिवो एठी गोटे इलेक्ट्रॉन डोनर और ये के कोन ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करले जे रिड्यूस होबो ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करी कोन होबो ना रिड्यूस्ड होबो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करी कोन होबो ना डोनर होबो how are prosthetic groups different from cofactors तो prosthetic group of cofactor भीतर डिफरेंस पजैती prosthetic group बुडा कोन ना एटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जोटा टाइटली बाउंड थे काको ना एपो एंजाइम सहित बाइंड थांती बाय कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट फोर्सेस ना prosthetic group कोन ना समान टाइटली कोवैलेंट बॉन्ड थांती कोवैलेंट बा नॉन कोवैलेंट बॉन्ड थांती एंती एग्जांपल होचे हिम सेटा होची कोन ना हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल संग टाइटली कोवैलेंटली बाउंड है एबे ताको prosthetic group कहंती और कोफैक्टर कोन ना समान नॉन प्रोटीन पार्ट था जोटा एंजाइम रो जेटा कि इनऑर्गेनिक बा ऑर्गेनिक बहुत ही पारंती जेटा नॉन प्रोटीन नुए prosthetic group टा मेनली प्रोटीन थाते एमन तो नॉन प्रोटीन थाते एमन लूजली बाउंड थाते एंजाइम को माने ट्रांजिएंटली बाउंड थाते तो टिके हीट देने ये दिन समय छाड़ जाते सेट पे कोन ना prosthetic group टा कोवैलेंट स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड करते आ समय मेनली प्रोटीन मॉलिक्यूल थाते आ फैक्टर्स के ना मेनली नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थाते और ट्रांजिएंटली बाइंड करता एपो एंजाइम को
तो एटा थला दी जाको डिफरेंस प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर भितरे glycine and alanine are different with respect to one substituent of on the alpha carbon. What are the other common substituent groups? Yeah, ଗୋଟେ ଖାଲି କାର୍ବନ ଅଲଗା କଣ ଥାନ୍ତି ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଜାଗାରେ CH3 ଥାଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଜାଗାରେ କଣ ଥାଏ ନା CH3 ଥାଏ ଗ୍ଲାଇସିନ ଆଉ ଆଲାନିନ ଭିତରେ ଆଉ ଅଦର ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି COOH ଏଠି ଯଦି ଆମେ C ଦେଖିବା ଏଠି ତ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ R ଲିଖିଲେ ଏଠି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଚେ ତଳ ଲେଖିବା CH H2R ଏଠି ଗ୍ଲାଇସିନ କଣ ଥାଏ ଏଠି H ଥାଏ ଆଉ ଆଲାନିନ କଣ ନା CH3 ଥାଏ ତ ଆଉ ଅଦର ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି NH2 ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ହଉଛି COH ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ରୁପ ତା ତିନିଟା ଯାକ ଅଦର କମନ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ କେ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ NH2 ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗୋଟେ कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप तापर क्वेश्चन स्टार्च cellulose glycine chitin are polysaccharides found among the following choose the appropriate and right diagnostic तो बजाय कहा संग्रह को पॉलीसैकेराइड अछि कॉटन फाइबर कौन थिबो ना कॉटन फाइबर सेलुलोज थिबो कहीं कि सेटा हो जो प्लांट सेलुलोज गोटे मेन कंपाउंड आ कॉटन हो जो प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ सेलुलोज तो कॉटन रे कौन फाइबर रे कौन हबो ना सेलुलोज रे कॉटन फाइबर रे कौन रहबो ना सेलुलोज रहबो कि सेलुलोज टा होछु गोटे लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जेटा कि प्लांट सेल वॉल रो मेन कंपोनेंट थाए आ सेटा कॉटन रे बहुत मात्रा थाए तापरे कौन ना एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच हमको जाना अछि सेते कौन थाए ना काइटिन मॉलिक्यूल थाए काइटिन मॉलिक्यूल टा कौन गोटे लॉन्ग हेटेरोपॉलीमर कौन ना चेन जोथे कि कौन थाए ने हमर मैंने न्याग और नाम तांदु जेडा मिसी कोंगन ने काइटिन फॉर्मेशन करता सी एमती कॉकरोच रे एक्सोस्केलेटन रे थाए आ फंगी मान को सेल वॉल रे भी थाए उटा कौन ना काइटिन तापरे कौन ना लिवर और स्टोरेज के ग्लाइकोजन एनिमल रो स्टोरेज को स्टोरेज कौन स्टार्च स्टोरेज सेटा ग्लाइकोजन सेटा लिवर स्टोरेज होता लिवर और ग्लाइकोजन सेटा गोटे मल्टीब्लास्ट पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज जोटा कि स्टोर्ड एनर्जी प्रोवाइड करना स्टोरेज भाबे स्टोर होई थाए लिवर रे जब आउ केतरा फंगाई रे भी देखिया को मिले ताबे कोन ना पील्ड पोटैटो कोन थिबो ना स्टार्च थिबो एन स्टार्च में पोटैटो में सोटो स्टार्च ता कोन स्टार्च ता होचे ग्लूकोज रे गोटे लॉन्ग चेन गुडो किंतु सेटा ब्रांच नुए तो ये मान को स्टार्च ता कोन ना प्लांट्स मान को स्टोरेज तो स्टार्च रे मान को ग्लाइकोजन रे जेले लिवर रा प्लांट्स मान को कोन ता ना स्टार्च स्टोर हुए Tableau question. Short answer type question. Enzymes are proteins and enzymes are proteins. Proteins are long chains of amino acids linked to each other by peptide bonds. Amino acids have many functional groups in their structure. These functional groups are many of them at least ionizable. As they are weak acids and bases in chemical nature, this ionization is influenced by pH of the solution. For many enzymes, activity is influenced by surrounding pH. This is depicted in the curve as below. Explain briefly. तो लेखिकी जो एंजाइम एक्टिविटी पीएच ऊपर एमती डिपेंड करे तो एठी ग्राफ टा गोटे देछि गोटे बेल शेप ग्राफ देछि जेटे गोटे मझी जगह रे गोटे एठी ऊपर को उठिचे एपट कम अछि एपट भी कम अछि तापर एठी एंजाइम एक्टिविटी देखिचे तो ए ग्राफ रो हम कोन देखा होछि ना मेन कथा होछि एंजाइम कोन ना गोटे नेरो रेंज ऑफ पीएच से काम करे ताको ऑप्टिमम पीएच तार कहते ऑप्टिमम पीएच रे कोन थाए ना ऑप्टिमम पीएच रे से एमिति पीक को चल जाए ऑप्टिमम पीएच रे सेमिति पीक को चले जाए तो अन्य बाकी माने से ऑप्टिमम पीएच जो अलगा है ना बेसी हो से तो तार एंजाइम एक्टिविटी कमी जिवो आ आको गने भी तार एंजाइम एक्टिविटी कमी जिवो तो से सही कथा लिखि कोन ना गोटे एंजाइम एक्टिविटी गोटे एंजाइम एक्टिविटी लिखला गोटे एंजाइम एक्टिविटी लिखला एंजाइम एक्टिविटी कोन तर ऑप्टिमम पीएच कोन ना ऑप्टिमम पीएच तार एतिके आछे तो ऑप्टिमम पीएच रेंज एतिके आछे तो सही टाइम रे कोन हला तार एक्टिविटी सबटो अधिक हला एंजाइम रो यदि ऑप्टिमम पीएच कम हला तार एंजाइम रो एक्टिविटी कमी कमी गला जते ऑप्टिमम पीएच रो हम दूर गले एफर्ट को अधिक को गले न कम को गले तार कोन ना तार एक्टिविटी कमी कमी गला एंजाइम तो नॉन फंक्शनल हे गला तो एई कथा से लेक्चर ग्राफ ना ऑप्टिमम पीएच सबटो हाईएस्ट एक्टिविटी आ बाकी सब रे कोन ना लो एक्टिविटी is rubber a primary metabolite or a secondary metabolite? Write 4 sentences about rubber. Like rubber टा primary metabolite ना secondary metabolite. ना मो फर्स्ट कहि होछि रबर टा कोन ना गोटे सेकेंडरी मेटाबोलाइट
कहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन ना प्लांट मान को सब सही पार्ट जोटा कि ताको ग्रोथ रे किछि काम रे यूज आसनी ना रोल न था तांकर ग्रोथ है इज नो रोल in their growth, photosynthesis, reproduction, or any primary function. The second metabolite कहते हैं ना plant product जोटा कि तांकर growth, metabolism, reproduction ବା कोई भी primary function काम रे आसनी. तो रोबोट टा कोन रोबोट पॉइंट कोन फर्स्ट पॉइंट हो रोबोट टा 614 polyisopirin रोबोट टा कोन न तो केमिकल स्ट्रक्चर हो 614 polyisopirin सेटा कोन थाए ना ताको एक्सट्रैक्ट करा जाए रोबोट ट्री रू ताको एक्सट्रैक्ट करा जाए तापर गोटे এটা কোন না it is a byproduct of the lactiferous tissue of vessels that are in form of latex এটা lactiferous tissue of vessel আছে তার যে byproduct তারপরে এটা কোন না largest terpenoid as it contains 400 isoprene units এটা কোন না largest terpenoids और fourth point कोन it is elastic waterproof and good electrical conductor and first point कोन हला rubber is extracted from rubber tree ना कोन ना Habia brasiliensis out of one it is the byproduct of lactiferous tissue of the vessels that are in the form of latex. Third point kon it is the largest of the terpenoids because it contains over 400 isoprene units. And fourth unit kon it is elastic, waterproof, and good electrical conductor. Waterproof and good electrical conductor. तापर कौन systematically represent primary, secondary, tertiary structure of hypothetical polymers, say for example a protein. तो ଗୋଟେ hypothetical protein polymer ର primary structure, secondary structure କହିଛୁ. तो ଆମେ ଏଠି ଇଏ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଯଦି क्वेश्चन को ପଢିଲେ ନା ତାର ଗୋଟେ primary structure, secondary structure କଣ ହବ? प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर कोन प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर खाली गोटे पेप्टाइड बॉन्ड थियो गोटे पेप्टाइड बॉन्ड थियो और सेमा कोन ना गोटे लिनियरली अरेंज्ड हेतिबो गोटे पेप्टाइड बॉन्ड थियो प्राइमरी कोन हो ना लिनियरली अरेंज्ड हेतिबे और बेले बेले कोन थाय ना सेमांटिक कर्ल हे जाय जब कहीं ना तन में गोटे हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाय नॉन मेनली यूनिफॉर्म थाते सेकेंडरी फर्स्ट स्ट्रक्चर कोन सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो दीटा गोटे होची दोच अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आउट होची बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स कोन थाय ना चेन गुड़ा स्पाइरली कॉल थे राइट हैंडेड हेलिक्स पेसन रे और सेते कोन था सेमन मेल हाइड्रोजन बॉन्ड थाए गोटे सीओ आ गोटे एमिनो एनएच भितर माने फर्स्ट रो सीओ और फोर्थ वाला रो एनएच भितर गोटे हाइड्रोजन बॉन्ड था सेत में सेमन अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन करथांती एटा 3 डायमेंशनल हमरो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कोन प्राइमरी स्ट्रक्चर टा गोटे लीनियर स्ट्रक्चर जेटा कि ओनली पेप्टाइड बॉन्ड जो होइते और सेकेंडरी स्ट्रक्चर टा कोन गोटे 3 डायमेंशन जेटा हाइड्रोजन बॉन्ड और बीटा प्लेटेड शीट रे कोन हेते ना दीटर अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन कोनते ना जॉइन हो जानती इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को लेके दे गुडे लाइक स्ट्रक्चर बनाती जेटा कि बीटा प्लेटेड शीट कोनते एग्जांपल जमते केराटिन और ना एग्जांपल हो केराटिन तो एटा तला अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड जेटा कि सेकेंडरी रो और टर्शियरी रो कोन ना समान को भितरे ढेर गुड़ा इंटरेक्शन होता है जमते कि हाइड्रोजन बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड भांडुआल इंटरेक्शन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बा डाइसल्फाइड लिंकेज ये सब लिंकेज है कौन था से माने गोटे कॉइल स्ट्रक्चर होता है एटा कौन थे टर्शियरी स्ट्रक्चर तो टर्शियरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन टर्शियरी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग गुड़ा कौन गोटे कहूँ मन रख हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग भांडुआल इंटरेक्शन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और डाइसल्फाइड लिंकेज तो ये सब मान को नहीं कहते ना समान को गोटे कॉइल स्ट्रक्चर बने थांती गोटे कॉइल स्ट्रक्चर बने थांती टर्शियरी स्ट्रक्चर वाला तो तार ए सब कंपोनेंट्स को नहीं कि तापर क्वेश्चन कोन न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जस्टिफाई विथ एग्जांपल तो कोन क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड में सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करंती तार एग्जांपल से दे करो न्यूक्लिक एसिड तना कोन ना समान होचंती गोटे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमेरिक मैक्रोमोलिक्यूल नॉन लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जेटा कि हम लाइफ पे बहुत इंपोर्टेंट द सेकंडरी the secondary structure of nucleic acid molecules माने the base pairing interaction within a single molecule or a set of interacting molecule से कहउजे सेकेंडरी स्ट्रक्चर माने होची जो बेस पेयर होची तांक मन करे ଗୋଟେ सिंगल मॉलिक्यूल बा a set of interacting molecule तो डीएनए और आरएनए कोन दीरे जाको मेन न्यूक्लिक एसिड बट ताको सेकेंडरी स्ट्रक्चर टिका अलगा कि डीएनए और सेकेंडरी स्ट्रक्चर रे दीरे कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड थाए जेटा कि
कॉमन एक्सिस हेलिकल स्ट्रक्चर रे कॉइल होता और से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है और आरएनए रो सेमती डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है तो ये थिला सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड तमाम पॉलीमर कहते डीएनए रे कहते ना आउट डीएनए स्ट्रैंड संग से हाइड्रोजन बॉन्ड के कनेक्ट है कि स्पाइरल फॉर्मेशन ये करते तो ये थिला न्यूक्लिक एसिड सेकेंडरी स्ट्रक्चर तापर 5 नंबर कौन कमेंट ऑन द स्टेटमेंट लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क तो लिविंग स्टेट में कौन लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क तो लिविंग ऑर्गेनिज्म टा कौन केबे इक्विलिब्रियम न असन काहे ताकर इक्विलिब्रियम रे वर्क परफॉर्म हे पारेनी तो सेत पे ना लिविंग ऑर्गेनिज्म सब गोटे स्टेडी स्टेट मेंटेन करि थाते जार सब बायोमोलिक्यूल्स कंसंट्रेशन को स्टेडी स्टेट रखिया पई आउ से बायोमोलिक्यूल दिस बायोमोलिक्यूल्स आर इन ए मेटाबॉलिक फ्लक्स any chemical or physical process moves simultaneously to equilibrium as living organism work continuously they cannot afford to reach equilibrium the living organism माने सबले गोटे कंटीन्यूअसली काम करथन इक्विलिब्रियम गले इक्विलिब्रियम रे केबे वर्क परफॉर्म बनी सेइत में लिविंग सिस्टम गुडा कोना नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट जेटा कि टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क this is achieved by energy input this is achieved by energy input provided by live metabolism तारे कोन से and living past हो जो गोटे इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेट रे वर्क टोटल वर्क डन इज जीरो इक्विलिब्रियम रे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इक्विलिब्रियम रही पाइबे काहे ताको वर्क परफॉर्म करियर अछि और सेकंड कोन ना लिविंग इक्विलिब्रियम इन स्टडी स्टेट तो लॉन्ग क्वेश्चन पे हम एडिके आसीबा एपर्यंत दरकार लॉन्ग क्वेश्चन पे एक्सप्लेन करिया दरकार so first formation of an enzyme substrate complex is the first step in the formation in the catalyzed reaction. Describe the other steps till the formation of the product. So each enzyme molecule has an active site for specific binding of substrate molecules. The enzyme work by altering the activation energy of the reaction. तो enzyme molecule होता है ना what a active site है for specific binding substrate molecule और specific binding पे what है active site है. The enzyme केमती काम करे ना से एक्टिवेशन एनर्जी को अल्टर करके माने कम करके तार एनर्जी ना एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ना रिएक्शन को बढ़ाता है the catalytic site of an enzyme can be described as follows the substrate process to be to the active site of the enzyme fitting into it substrate कौन करे ना तेरे एक्टिव साइट वास की बाइंड है तो सबस्ट्रेट कौन था ना सबस्ट्रेट कौन था ना तेरे एक्टिव साइट को की बाइंड है तो एक्टिव साइट था इटा एक्टिव साइट को की बाइंड है the binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape leading to formation of enzyme substrate complex तो एटी कौन होता है ना जो तो सॉफ्टवेयर जो तो उसके बाइंड करे से एंजाइम को इंड्यूस करे निजो शेप को चेंज कर दे और तक कौन फॉर्मेशन करे ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करे एटा होची एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स the active site of the enzyme now is in close proximity with the substrate break its chemical bonds and new enzyme product formation is enzyme product formation complex is formed तो कौन था ना एक्टिव साइट एंजाइम जेटा क्लोज प्रॉक्सिमिटी था सबस्ट्रेट संगरे तो कौन था ना समय ब्रेक करंती और सेवन कोन ना निज भीतर गोटे केमिकल बॉन्ड बनांती और कौन था ना सेटा फॉर्मेशन रो ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तापर कौन था ना एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट इन द ऑफ द रिएक्शन द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन तो से कौन कहला फर्स्ट एंजाइम था तो एक्टिव साइट था एक्टिव साइट रे सबस्ट्रेट बाइंड हुए एक्टिव साइट रे सबस्ट्रेट बाइंड होला पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुए दूसरे के एंजाइम रो टिके स्लाइड तार ये चेंज हुए ता शेप ता चेंज हुए तार कोनते ना सेही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कोन हुए ना ए दिरा सबस्ट्रेट मान निजे भीतर बॉन्ड फॉर्मेशन करंती जेटा कि नोआ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुए एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुए और तार कोनते ना एंजाइम से दिटा को रिलीज कर दियंते एज ए प्रोडक्ट तापर सामान्य देके फर्दर अलग अलग रिएक्शन रे इन्वॉल्व होंती ना कोन कहते ना फर्दर अलग अलग रिएक्शन रे के इन्वॉल्व होंती तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन व्हाट आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम एक्सप्लेन एनी टू विद द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज तो पजाची क्लासेस ऑफ एंजाइम कोन तो टोटल ऊपर हमर होचे 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम ताको हम एमती मन रखिबो ओ टी एच एल आई एल ओ टी एच लिल ओ टी एच लिटिल बा ओ टी एच लिल बोली तो फास्ट को दिन ऑक्सीडाइजेज ट्रांसफरेज हाइड्रोलेज लाइएज आइसोमरेज तापर लाइगेज
राइट आइसोमरेज तापर कोन होछि ना लाइगेज तो सेमति मान रखिबो तो फर्स्ट कोन ताका नोमेनक्लेचर करा जाय केमति करा जाय तो 6 क्लास से करा जाय और तार भी सब क्लास से ताको 4 डिजिट नंबर ताको रखा जाय 4 डिजिट नंबर ताको डिपिक्ट करा जाय तो फर्स्ट होचो ऑक्सीडो रिडक्टेज बाय डिहाइड्रोजनेस एते कोन एंजाइम माने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन माने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने काम करते जो हम प्रीवियस गोटे क्वेश्चन हम देखितले गोटे रेड्यूस टा कोन ते ऑक्सीडेज है गोटे ऑक्सीडेज कोन ते रेड्यूस है तामते ऑक्सीडा जनकर ऑक्सीडेशन करते और जनकर रिडक्शन करते रिडक्शन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते तापर कोन ना ट्रांसफर करते सना गोटे फंक्शनल ग्रुप को गोटे मॉलिक्यूल रो आउट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते ताको कोन करते ना सेटा फ्री स्टेट होने सब बाइंड स्टेट रो सेटा कोन करते ट्रांसफर ना या पर जो एसजी टा अछि ताको एसडीएस ग्रुप पड़ा त एसजी फॉर्मेशन हला बे फंक्शनल ग्रुप रो ट्रांसफर हला ताको कोन को हला ना ट्रांसफरेज को हला तापर कोन ना हाइड्रोलाइसिस दो एंजाइम कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड्स लाइक ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक सिस सी हैलाइड पीएन हाइड्रोलाइसिस रे काम कोन ना वाटर अछि की ऐड हबो देइता कोन हबो ना डिवाइड वाटर रो प्रेजेंस रे बॉन्ड ब्रेक है कि गोटा को एच मिलियो आ गोटा को OH मिलियो ताको कोन कहला ना हाइड्रोलाइज कहला तो हाइड्रोलाइसिस कहला हाइड्रोलाइसिस एंजाइम हाइड्रोलाइजेशन हाइड्रोलाइसिस कहले बॉन्ड मान पर दम कोन कहला ना हाइड्रोलाइज कहला तार कोन ना लाइज लाइज ता कोन बिना वाटर एनवायरनमेंट माने विदाउट एन हाइड्रोलाइसिस जति बॉन्ड क्लीवेज हला रिमूवल ऑफ ग्रुप हला जेटे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हे गला या ग्रुप रिमूव हे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हे गला तो सेटा कोन करा जे ना लाइज बोली कहला सेटा कोन कह जे ना लाइज बोली कह एटी देखो सी संग x अछि सी संग डबल बॉन्ड रे y अछि लाइज में देना x y निते गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कले और सी सी भितरे कोन हला डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हे गला एटा तला कोन ना लाइज ना बिना हाइड्रोलाइसिस रे हाइड्रोलाइसिस लिपिड ये फॉर्मेशन आलो बॉन्ड फॉर्मेशन आलो तापर कोन ना आइसोमराइज जो कोन ना मॉलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर वन केमिकल फार्मूला को सेम रखिके ताको भी कोन कोनते ना तार के स्ट्रक्चर रीअरेंज करंती या समान करो पोजीशन में चेंजेस करंती से स्ट्रक्चर भीतर ता कोन करना आइसोमरेज कहला जेंति ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे जदि हम आइसोमरेज दबा तान कोन सब ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो तार केमिकल कंपोजिशन सेम रहला केमिकल फार्मूला सेम रहला बट स्ट्रक्चर का चेंजेस हला जेका aldose टा कीटोज फॉर्मेशन हे ना ता कोन कहला ना आइसोमरेज कहला आइसोमरेज कहला तार तीन प्रकार कोन आइसोमरेज म्यूटेज एंड एपिमरेज तने म्यूटेज टा कम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बोलते म्यूटेज कहला जदि शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ साइड ग्रुप ऑफ पोजीशन चेंज होला तो कोन कहला म्यूटेज कहला और एपिमरेज कहला एपिमर पुत्र हबो ना जाइलुलोज टा राइबुलोज भीतर कन्वर्ट हे जो ता कहते एपिमरेज चेंजेस इन पोजीशन ऑफ द वन कांस्टिट्यूएंट और कार्बन ताको एपिमर मान को भीतर चेंजेस को कोन कहला ना एपिमरेज कहला तो आइसोमरेज में के आछे आइसोमरेज एपिमरेज एंड म्यूटेज माने आछथि तापर सिक्स्थ क्लास ऑफ एंजाइम के ना लाइगेज माने कोन ना समान होचंदी ग्लू जेटा कि दिए जाको ये को जुड़े के रखिबे enzymes catalyzing bonding of two chemicals with the help of energy obtained from ATP resulting formation of bonds such as CO, CS, CN, PO. Example, pyruvate carboxyl use. ना समय को ना pyruvic acid CO2 ATP of H2 देना oxaloacetic acid plus ATP plus phosphate formation होगा सेटा वाला ligase enzyme जो काम ligase type of enzyme में काम पर अटर वाला हम एंजाइम मान को कथा गला तार में न्यूक्लिक एसिड एक्जिबिट सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब थ्रू व्हाट्सएप इन क्लिक मॉडल तार को न्यूक्लिक एसिड में सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मानते ना न्यूक्लिक एसिड को ना लॉन्ग चेन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स जेटा कि पॉलीमराइजेशन है कि न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन फॉर्मेशन हुए न्यूक्लिक एसिड को होता है ना वाइड रेंज ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाती सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होची ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर माने को सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द सेट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन बेसिस एंड सुगर फॉस्फेट बैकबोन रिस्पांसिबल फॉर द शेप ऑफ न्यूक्लिक एसिड सेकेंडरी स्ट्रक्चर कोन पर ना न्यूक्लिक एसिड को शेप देता जेमते एटी गोटे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देही डबल हेलिक्स टा गोटे शेप तो एटा हे गला कोन ना हमरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हे गला तानो वाटसन अप्लिक कोन देतले ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देतले सेटा कोन क्रिस्टलोग्राफी स्टडी करके द डीएनए ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ना हेलिकल ट्विस्टेड डबल चेन पॉलीसैकेराइड पॉलीडीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड macromolecule. The two strands of DNA run anti-parallel to each other called DNA duplex that would 3 days to 5 days out of 5 days to 3 days direction they run करते हैं. The spiral twisting of DNA has two types of alternate group, out of major group, out of minor group. And the गटे minor group shallow group देइछि, आर्टी कोन ना major group देइछि, major पर deep group देइछि.
ତ ଗୋଟେ minor group ଆଉ ଗୋଟେ major group. One turn of 360 degree of spiral has about 10 nucleotides on each strands of DNA, occupying a distance of about 3.4 nanometer. then ଗୋଟେ turn ର 360 degree ରେ 10ଟା nucleoside କେତେ distance cover କରନ୍ତି ନା 3.4 nanometer cover କରନ୍ତି distance. ଆଉ କଣ ନା the nucleotides within each strand are held together by phosphodiester bonds between 5' carbon of one nucleotide and 3' carbon of the adjacent nucleoside. These strong covalent bonds hold the sugar and phosphate backbone together. Yes. The two strands of DNA are held together by weak hydrogen bond. ତାଙ୍କ ଦିଟାକ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ ନା weak hydrogen bond ଥାଏ. ତାଙ୍କ ଗୋଟେ AT ଭିତରେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଆଉ C ଆଉ G ଭିତରେ କଣ ନା ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଥାଏ ହାଇଡ୍ରୋଜନ ର. ତାପରେ ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସ୍ପେସିଫିକ ବେସ୍ ପେୟାରିଂ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ପିରିମିଡିନ ତାଙ୍କର ବେସ୍ ହେଇଥାଏ ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିମିଡିନ. ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ମିଶି 100% ବନାନ୍ତି ଯେଠି ଚାର୍ଗପ୍ସ ରୁଲ ଥିଲା. ତ ସେମାନେ ଇଏ କଣ କରନ୍ତି ନା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବୋଲି ବନାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବନାନ୍ତି. ତାର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ଇଫ ଟୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି. ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ଟା କଣ? न्यूक्लियोसाइड टा कौन न्यूक्लियोसाइड टा गोटे कंपाउंड फॉर्म बाय यूनियन ऑफ नाइट्रोजन बेस पेंटोज सुगर न्यूक्लियोसाइड एटा नाइट्रोजन पेंटोज सुगर फॉस्फेट एटा होची स्लाइटली बेसिक एटा होची एसिडिक एटा कोन ना न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट बोथ राइबोज और डिऑक्साइबोज सुगर था एटी फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड था न्यूक्लियोटाइड टा तापरे साइटिडिन यूराइडिन एडेनोसिन गुआनासिन थाइमिडिन आइनोसिन एटी एएमपी जीएमपी सीएमपी एएमपी डीएमपी सो मोनोफॉस्फेट एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट गुआनासिन मोनोफॉस्फेट एमती सब था या को जदि मोनोफॉस्फेट नगे दिला देन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हे गला जेटा तले एडेनोसिन एमती देखा तार फॉस्फेट ग्रुप लागि गला तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हला एटा तले न्यूक्लियोसाइड डाउच न्यूक्लियोटाइड तापरे कोन a described various form of lipid with an example the various form of nucleic lipids our example सहित lipids are the esters of higher fatty acids with alcohol such as glycerol. This can be classified as simple lipids, compound lipids, or steroids. Simple lipids, compound lipids, or steroid. The lipid गुड़ा कौन है ना esters of fatty acid and alcohol, alcohol into glycerol. Glycerol और high level of fatty acid मानकर होची ester को ना ester bond को ester को कौन कहा जाए लिपिड कहा जाए. Simple lipid कौन simple lipid esters of fatty acid with alcohol जेमते कि example जो fats जेटा के esters of higher fatty acid with glycerol और wax टा कौन ना esters of higher fatty acid with alcohol other than glycerol. Glycerol संग जो higher fatty acid माने मिसले वो fat को आला तो glycerol जो अलगा alcohol संग जो higher fatty acid माने ester bond formation कौन ताऊ कौन करा ना ताऊ wax बोले को आला. Then compound or conjugated lipids are those compounds which contain simple lipids or prosthetic group. They include glycerophospholipid, also known as phospholipid, which one of the fatty acids is replaced by phosphoric group, which is linked to nitrogenous group like choline, ethanol, amine, serine, lecithin, etc. That is lecithin or cephalin. The glycerophospholipid. तार को ना स्पिंगोफॉस्फोलिपिड जेटा कि अल्कोहल टा कौन था और स्पिंगोसिन संगे कनेक्ट ना अल्कोहल जगह स्पिंगोसिन कनेक्टेड था माने ग्लिसरॉल जगह स्पिंगोसिन था छडा कोनते कोन स्पिंगोलिपिड कोन ग्लाइकोलिपिड कोन now which contains pinganine with a fatty acid and a monosaccharide sugar that is cerebroside or ganglioside tarantulo glycolipid then combined by conjugated lipid के glycerophospholipid sphingolipid और glycolipid. Glycerophospholipid for example होती lecithin cephalin sphingolipid रो होची normal जेटा स्पिंगोसिन एक सहित लगी था ग्लाइकोलिपिड रखे ना cerebroside ganglioside. तापर steroids are compounds with different chemical nature but similar physical property. For the steroid, their structure is based upon 4-ring cyclopentane of hydroquinonidine. Then cholesterol कौन थे cholesterol टा उधर steroid. तेरा के एक structure थी वो टाइप cholesterol structure. तापर कौन था ना prostaglandin माना समय में कोई arachidonic acid रा derivative था तो तार में 20 carbon compound समय में भी biologically active lipid. Prostaglandin ढेर useful था. prostaglandin नो lipoxygenase पाथवे था ताकि cyclooxygenase पाथवे था cyclooxygenase जो सब PGI2 PGA prostacyclin prostaglandin thromboxane ये सब फॉर्मेशन सेटा तमे ऊपर पड़िबो तना समान गोटे टाइप ऑफ लिपिड सब माने भी गोटे टाइप ऑफ लिपिड. तो चैप्टर टा एटी एंड हला एग्जांपलर डिस्कशन ऑफ
Our exemplar discussion of chapter number 9th of class 11th biology, that is biomolecules. Biomolecules ର chapter discussion ଏଠି finish ହେଲା। ତ ତମେ chapter ଟାକୁ ଭଲସେ ପଢିବ, ଏଟା ଖାଲି chapter ଟାକୁ ଭଲସେ ପଢିବ। chapter ରେ most of the କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, chapter ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ଯାଇଛି chapter ରେ। chapter କୁ ଭଲସେ reading କରିବ, ଆଉ exemplar ଟା ନିଜକୁ ଆଉଥରେ ପଢିକି ନିଜକୁ solve କରିବାକୁ try କରିବ, ନିଜେ solve କରିବାକୁ try କରିବ।